हेलो बच्चों, वेलकम टू बोलो फिजिक्स क्लासेस। बोलो फिजिक्स क्लासेस का स्वागत है। टुडे आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Electromagnetic induction means due to changing magnetic flux across a coil and EMF is induced in the same coil है बेटा, that is called as an electromagnetic induction है। वो electromagnetic induction में core concept क्या है देखो इधर। First one is magnetic flux है बेटा। So what is a magnetic flux? देखो, suppose consider a coil here, this is a coil which is having the only one turn. Its area of the cross section A, which is placed making some angle theta in the direction of the magnetic field here beta, in the direction of magnetic field B here. So the magnetic flux across the coil is defined as pi is equal क्या हो जाता है बेटा, B dot A हो जाता है, और that is pi is equal to BA cos theta हो जाता है for n number of turns का, for n number of turns क्या हो जाता है बोलो, for n number of turns pi is equal to NAB cos omega t हो जाता है बेटा, where theta is equal to omega t is already known। ठीक है। फॉर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स को पाई इज इक्वल क्या हो जाता है, डी पाई इज इक्वल टू बी डॉट डी हो जाता है बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी पाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी हो जाता है, और पाई इज इक्वल हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी है। दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर ओनली वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, Lenz law. What is the Lenz law? See beta. Lenz law. Lenz law states that law of conservation of energy है। ठीक है। The direction of induced EMF in a coil is always opposite to causes to it beta. That is E is equal to minus d phi by dt हो जाता है, और E is equal to minus d by dt of pi वैल्यू कितने बेटा, NAB cos ओमेगा टी हो जाते, और इसको क्या लिख रहा हूं देखो, E इज इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाते बेटा। इफ ओमेगा टी इज 90 डिग्रीज, E मैक्स इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, NAB ओमेगा हो जाता है बेटा। ठीक है। फिर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस वैल्यू इज 2 पाई f हो जाता है। ठीक है। सपोज E इज इक्वल क्या है बेटा, minus d by dt of b dot a है ना। Suppose if the taken coil is in the form of a circular है बेटा of radius of, इसका एरिया क्या हो जाता है, a is equal to pi r square हो जाता है। ठीक है। Therefore E is equal क्या हो जाता है बोलो, minus d by dt of b into pi r square हो जाता है। ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाता है बोलो, E is equal to minus b pi into 2r into dr by dt हो जाता है। दिस इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन ए सर्कुलर कॉइल। ठीक है। नेक्स्ट, द ईएमएफ डेवलप्ड इन ए मूविंग रॉड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द मोस्ट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन मूविंग रॉड है बेटा। सपोज कंसिडर ए रॉड है बेटा, ए रॉड ऑफ लेंथ एल, इसका रॉड है रॉड ऑफ लेंथ एल विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v in a magnetic field बेटा on the two rails ऐसा। ठीक है। Suppose it has to be displaced through a small displacement x है बेटा, इसका लेंथ l हो गया। The EMF developed in this given by E is equal to minus d by dt of b dot dA means l into x हो जाता है बेटा, that is E is equal to BLV। okay, this motion EMF induced a moving rod in a magnetic field. Suppose if the rails have some amount of resistance R, then how would be the changes the motion EMF? देखो बेटा, suppose consider two rails है बेटा, ऐसे कनेक्ट किए, across a resistance R है, वो R है। ठीक है। This a rod of length L is moving with velocity v ऐसा। So in this case में क्या हो जाता है, applied force would be is equal to the magnetic force developed in the rod, दोनों भी बराबर हो जाता है बेटा, that is equal to Fm is equal to Fx टर्म तो बराबर हो जाते हैं। Therefore इसमें the EMF developed in the rod is given by कितने हो जाते हैं बोलो बेटा, E is equal to already you know what is that, F is E is equal क्या हो जाते हैं, E is equal the EMF
डेवलप्ड इन द कंडक्टर E इज इक्वल टू BLV है, हो जाता है बेटा BLV है, बट E इज इक्वल टू IR लिखना पड़ता है ना, दैट इज इक्वल टू BLV हो जाते हैं, I इज इक्वल टू BLV अपॉन R हो जाता है, फिर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेल्स. ओके, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर इज गिवन बाय F इज इक्वल टू IBL है बेटा, IBL, दैट इज F इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है BLV अपॉन R इंटू BL हो जाता है बेटा, दैट इज F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R हो जाता है. दिस मच force has to be developed, this much magnetic force has to be developed in the conductor. ठीक है. Next, the power developed in the conductor is given by P is equal to F dot V हो जाता है बेटा, that is P is equal to F वैल्यू कितना हो गया V हो गया, that is B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R हो जाता है. This much power has to be developed in the rod. ठीक है बेटा, लिखो. देखो बेटा प्रॉब्लम 2024 में पूछे, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ 2.5 meters and width 2 meters is placed at 60 degrees to the magnetic field of 4 Tesla दी है. The loop is removed from the field in 10 seconds है बेटा. The average EMF induced during this time would be equal to how much? Let us consider बेटा this a loop है, loop है, the number of turns इसमें n is equal to 1 हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ले ऐसा ऐसा तरफ ले, B is equal to 4 टेस्ला दिए, बट वो क्या लूप दिए बेटा रेक्टेंगुलर लूप दिए, दिस नॉट ए सर्कल लूप है बेटा, रेक्टेंगुलर लूप है, तो रेक्टेंगुलर लूप ऐसे लो, दिस रेक्टेंगुलर लूप है. ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप, इसका लेंथ कितना दिया L इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स और विड्थ V इज इक्वल कितना दिया बेटा B इज इक्वल टू 2 मीटर्स दी है. इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऐसा रखा दिया ये, which is making an angle of 60 degrees with the direction of B is equal to 4 Tesla. ठीक है, when it is removed from the field in the 10 seconds, the EMF developed इसमें कितने होंगे, ऐसा रिमूव किए है बेटा, ऐसा रिमूव किए, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट हो जाते हैं, हर एक एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा कट हो जाते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा कट हो जाते हैं. Due to cutting the magnetic flux, what happening is that the EMF is induced. So we should have to calculate how much amount of EMF induced in the 10 seconds. Already knows the EMF induced in a magnetic field का formula क्या है बेटा, E is equal to d phi by dt, that is equal to BA cos omega t upon dt हो जाता है बेटा, that is E is equal to B वैल्यू दी है 4 टेस्ला. So लेंथ कितने हो जाते हैं, लेंथ इज इक्वल टू L इंटू B है, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2 हो गए इंटू cos 60 है बेटा, cos 60 है, इज डिवाइडेड बाय dt वैल्यू 10 सेकंड्स है. ठीक है, और cos 60 वैल्यू कितने हो जाता है 1/2 है, और 2 गेट्स कैंसिल हो जाते हैं, 2 गेट्स कैंसिल हो जाते हैं, वो क्या हो जाता है E इज इक्वल टू, इसका दोनों तरफ गेट्स कैंसिल होते हैं 10, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट्स. ठीक है, तो बहुत आसान प्रॉब्लम है 2024 में पूछे, लिखो. देखो बेटा और एक प्रॉब्लम वो 2023 में पूछे, ए रॉड विथ सर्कल क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिए बेटा एंड लेंथ 40 सेंटीमीटर दिए, लेंथ इज वाउंड यूनिफॉर्मली विथ 400 टर्न्स ऑन ए इंसुलेटेड वायर. If the current of 0.4 amperes flows in a wire windings, the total magnetic flux produced inside the windings is the 4.2 10 to the power of minus 6 webers दिए. The relative permeability of the rod would be is equal to how much पूछे बेटा, वो भी बहुत आसान प्रॉब्लम है. देखो the magnetic flux pi is equal कितने हो गए बेटा, B dot E हो गए, B dot E, but the rod is in the form of a circular area, circular cross section है बेटा. इस circular cross section में करंट चल रहा है, कितने करंट चल रहे हैं, I is equal to 0.4 amperes करंट चल रहे हैं. So at the center of the solenoid, the magnetic field induction is already know B is equal to mu naught Ni, that is equal to mu naught into N upon L into I हो जाता है बेटा, वो भी इधर लिखना पड़ता है. That is pi is equal क्या हो जाता है बोलो, pi is equal B value is what is the B value बेटा, mu naught. mu naught means क्या हो जाता है, mu naught into mu r हो जाता है बेटा, mu naught into mu r
वो म्यू एम में म्यू नॉट क्या हो जाता है बेटा, म्यू हेम हो जाते हो, क्या हो जाते हैं, म्यू हेम हो जाते हैं, म्यू एम वैल्यू इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू बी वैल्यू कितने बेटा, एन अपॉन एल, एन अपॉन एल हो जाते हैं ना, इंटू आई इंटू ए हो गया, ठीक है। सो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स दिए दैट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 है बेटा, दिस इज अ permeability of the free space है बेटा, this value is 4 pi into 10⁻⁻7 into mu r, वो भी mu r निकालना पड़ता है। n by l the number of tons per unit length is equal to कितने बेटा, number of tons is equal to 400 दिए, 400 upon 0.4 है बेटा, because of length 40 सेंटीमीटर दिए इसमें, ठीक है, into I वैल्यू कितने करंट चल रहा है 0.4 इंटू ये कितने दिए बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। वो 4 पाई गेट्स कैंसिल हो जाता है बेटा, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻7 गेट्स कैंसिल हो जाते हैं, वो 0.4 और 0.4 हो कैंसिल हो जाता है। 10⁻⁻4 में 2 जीरोस चल जाता है बेटा, इससे म्यू आर इक्वल कितने हो जाता है बेटा, मिल जाता है, बोलो म्यू आर इज इक्वल टू 125,000/8 मिल जाता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 125, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम बेटा, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस विल आस्क इन द नीट आल्सो, ठीक है, देखो बेटा। और प्रॉब्लम देखो बेटा, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi is equal to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber से बेटा, if the resistance of the coil is 5 ohms दिए R दिए, then the induced current through the coil at t is equal to 2 seconds में, 2 is equal to 2 seconds में induced current कितने फ्लो हो जाते हैं वो भी निकालना पड़ता है बेटा, ठीक है। इस पर देखो pi is equal दिए, the induced EMF developed in the coil first निकालो, E is equal क्या हो जाता है बेटा, magnitude of E is equal to d phi by dt हो जाते हैं, that is E is equal to d by dt of pi वैल्यू कितने बेटा 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 हो गया, ठीक है। डेरिवेट करो कितने मिल जाते हो पूरे induced EMF, E is equal to 15t square plus 8t plus 2 मिल जाते हैं, ठीक है। एट t is equal to 2 seconds में, एट t is equal to 2 seconds में E इक्वल क्या हो जाता है बोलो बेटा, तो 60 हो जाता है, 60 प्लस वो 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 78 वोल्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। क्या निकालना पड़ता है इसमें, तो इंड्यूस्ड करंट निकालना पड़ता है। आई इक्वल क्या है बेटा, आई इक्वल ई बाई आर हो जाता है ना, ई वैल्यू इज आल्सो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड 78 अपॉन 5 हो गया बेटा, ठीक है। 5 1 जा 5 1 जा 5 5 जा 0.6 दैट इज इक्वल टू 15.6 एम्पियर हो जाता है, ठीक है बेटा, लिखो। और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, वो 2024 में पूछे, ए कॉइल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स है 200 टर्न्स, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन 0.2 मीटर स्क्वायर is rotated half of the revolution per second and it is placed in a uniform magnetic field of 0.01 Tesla perpendicular to the axis of the rotation of the coil, ठीक है। The maximum voltage generated in the coil is 2 pi by beta है बेटा, the value of beta निकालना पड़ता है। E max is equal कितना बेटा, E max is equal to NA B omega is already knows, okay, that is E max is equal to N वैल्यू कितना बेटा 200 दिए इंटू A वैल्यू 0.2 है और B वैल्यू कितना बेटा 0.01 टेस्ला और ऑफ रिवॉल्यूशन को ओमेगा इज इक्वल क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, सी 200 एंड दिस पॉइंट गेट्स कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 इंटू 0.2 इंटू 5 हो गया बेटा,
that is equal to what I am writing here. See, this is equal to what I am writing 2 pi by 5 हो गया बेटा इसका वैल्यू. इसको तो इससे कंपेयर करो, दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा से कंपेयर करो. बीटा इसको कितने मिलेगा बेटा? 5 मिलेंगे. ठीक है, लिखो. तो प्रॉब्लम देखो 2023 में पूछे और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड 2 or 3 times in the JEE mains में बेटा. A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field of 0.4 Tesla. B दिए, B इसको 0.4 Tesla. It is plane perpendicular to the field. Somehow the radius of the loop start expanding at a constant rate of 1 millimeter per second. The magnitude of induced EMF in the loop at the instant when the radius of the loop would be is 2 centimeters will be dash microvolt beta. That is what is the induced EMF in a coil. E is equal to is already know. E is equal to magnitude of E is equal to d phi by dt है beta. That is equal to d by dt of B dot A. But the coil would be is in the form of a circular beta. That is d phi by dt और E is equal to क्या हो जाता है बोलो? E is equal to d by dt of B into pi r square है बेटा. That is E is equal to B is a constant, B by t constant level, d by dt of r square means 2r into dr by dt हो जाता है. ठीक है, पूरा वैल्यूज दिए इसमें और सब्स्टिट्यूट करो. E is equal to B वैल्यू कितने दिए बेटा? 0.4 टेस्ला दिए into pi into 2 into r वैल्यू कितने दिए बेटा? r वैल्यू कितने दिए बोलो? Radius of the loop start 1 millimeter per second means what is that? 1 into 10 to the power of minus 3 meter per second है बेटा, dr by dt. And 2 और dr by dt वैल्यू दिए 1 millimeter per second means 1 into 10 to the power of minus 3 है बेटा. 2 into what is that? 2r वैल्यू दिए बेटा. Is the loop is a 2 centimeters. Radius of the loop is 2 centimeters. That is equal to 2 into 10 to the power of minus 2 meters. 2 into 10 to the power of minus 2 meters है बेटा. ठीक है, that is E is equal क्या मिल जाता है बोलो? E is equal to 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 5, 10 to the power of minus 6 हो गया बेटा. 10 to the power of minus 6 pi बाहर ले गो into 4 to the 8 to the 16 है बेटा. That is E is equal to 16 into 10 to the power of minus 6 pi हो गया. That is E is equal to क्या हो गया बेटा? 16 pi माइक्रोवोल्ट्स मिले हैं. ठीक है, देखो बेटा. अगर एक प्रॉब्लम देखो बेटा, वो 2024 में पूछे. A coil is placed perpendicular to the magnetic field of 5000 Tesla when the field is changed to 3000 Tesla बेटा in 2 seconds में, and EMF induced 22 volts दिए produced in the coil if the diameter of the coil is d is equal to 0.02 meters दिए बेटा. The maximum number of turns in the coil is equal to कितने हो बेटा? The induced EMF कितने बेटा? E is equal to क्या बोलो? d phi by dt है ना, d phi by dt for n number of turns को n into d phi by dt हो जाता है बेटा. n into pi is equal to b dot a. d by dt of क्या लिखना पड़ता है बेटा? b dot a लिखना पड़ता है ना. ठीक है, that is equal to E is equal क्या हो जाता है बोलो? n into डेल्टा b by डेल्टा t into a को पाई आर स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो पाई आर स्क्वायर है बेटा. ठीक है, E वैल्यू पूरा दिया कितने? 22 is equal to वो n निकालना पड़ता है. डेल्टा b कितने बेटा? 5000 minus 3000 is equal to 2000 हो गए. 2000 into पाई वैल्यू is 22 by 7 लिखो. R वैल्यू कितने बेटा? इससे R कितने मिलते हैं? R is equal to d by 2. That is equal to 0.01. That is equal to 1 into 10 to the power of minus 2 मीटर हो जाते हैं. तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 1 into 10 to the power of minus 4 हो गया बेटा. इस डिवाइडेड बाय dt is equal कितने? 2 सेकंड्स ही है. ठीक है, 22 गेट्स कैंसिल हो गए हैं. And 10 to the power of minus 4, 10 to the power of 3 gets cancel हो गया बेटा.
और 2 also gets cancelled out. n is equal कितने में जाए बोलो 70. The number of turns in the coil is 70 हो गया. ठीक है बेटा, लिखो. Okay बेटा, next concept is that induced EMF developed in a given rod in different cases है बेटा. ठीक है. Suppose consider a current carrying wire ऐसा है बेटा. ठीक है, current carrying wire है. When a current is flowing across the length of the wire, the magnetic field has to be developed like this बेटा. Along the length of the wire में magnetic field ऐसे develop हो जाते हैं. ठीक है. Suppose consider a conductor है बेटा. A conductor of length L है और L which at a distance of x दूर पर आ रहे x दूर पर है बेटा. When it is moving in the magnetic field like this with a velocity v, so the magnetic lines of forces cutting across the conductor would be equal to 0. That is equal to flux would be equal to 0. When the flux is 0, the induced EMF क्या हो जाता है बेटा? E is equal to minus d phi by dt is equal to 0 हो जाता है. इसमें भी 0 हो जाते हैं. ठीक है. Next, when a conductor is moving like this. When a conductor is moving like this with velocity v है बेटा, across this conductor also the magnetic lines of forces cutting across the conductor would be equal to 0, because of which is going to parallel to the lines of forces. So इसमें flux would be equal to 0 हो जाता है बेटा. इसमें भी the induced EMF E is equal to 0 हो जाता है. ठीक है. Suppose consider conductor है बेटा, और एक कंडक्टर ऐसे है. ठीक है, which has length L है बेटा, which is at a distance of x दूर पर है from the current carrying conductor, and which is moving with a velocity v, perpendicular to the direction of the magnetic field है बेटा. magnetic field ऐसे देखो, कंडक्टर magnetic field ऐसे, कंडक्टर ऐसा चल रहा है. ठीक है. then the magnetic lines of forces are cutting across it. magnetic lines of forces ऐसे है, कंडक्टर ऐसा चल रहा है. ठीक है. So lines of forces are cutting like this है बेटा, lines of forces cut हो रहे हैं. Therefore the induced EMF is equal to क्या हो जाता है बेटा? E is equal to mu naught IV L by 2 pi x into ln of x plus L upon x हो जाते हैं. ठीक है, ऐसा चल जाए तो ऐसा हो जाता है बेटा. नेक्स्ट, सेम कंडक्टर, if the same conductor is moving like this बेटा, ऐसा चल रहा है, which is at a distance of x है. इधर लिखो बेटा, the same conductor which is moving like this है बेटा with a velocity v है, which is at a distance of x, length of the conductor would be equal to L है बेटा. इसमें क्या हो गया? कंडक्टर ऐसा चल रहा है, कंडक्टर ऐसा, लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे है, so it would be cutting the magnetic lines of forces. इसमें भी क्या हो जाता है? induced EMF would be डेवलप हो जाता है बेटा. कितने induced EMF डेवलप हो जाता है बोलो? E is equal कितने हो जाते हैं? E is equal to mu naught IV L upon 2 pi x. इतने induced EMF हो जाते हैं. ठीक है बेटा, लिखो. और एक कॉन्सेप्ट देखो बेटा, मोशन EMF इंड्यूस इन ए रोटेटिंग रॉड है. सपोज कंसिडर ए रॉड है बेटा, वो रॉड है, इसका लेंथ कितना बेटा? L है, विच इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B है बेटा. दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B है. सो विच इज रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ऐसा रोटेट कर रहे हैं. इसका लेंथ कितना L है ना, ऐसा रोटेट कर रहे हैं विथ लीनियर वेलोसिटी v से रोटेट कर रहे हैं. लेट्स टेक दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A बेटा, ऐसा रोटेट कर रहे हैं विथ वेलोसिटी v है. सो द induced EMF इन द रॉड इज गिवन बाय कितने बेटा? E इज इक्वल टू ऑफ B ओमेगा इनटू L स्क्वायर हो जाता है बेटा. एट द मिड पॉइंट का पॉइंट ये मिडिल पॉइंट D ले वो, DA इक्वल क्या हो जाता है बेटा? E DA इज इक्वल टू of B omega into L by T whole square, that is equal to EDA equal कितने हो जाते हैं बेटा? of B omega L square by 4 हो जाता है. that is EDA equal कितने हो जाता है बोलो? 1/8 into B omega L square. DA is equal to ODB सेम रहता है बेटा, बट ODB निकालना पड़ता है. OD कैसे हो जाते हैं? EOD is equal to EOA माइनस EDA हो जाता है बेटा. दैट इज कॉल्ड EOD इज इक्वल टू
ऑफ बी ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 1/8 इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर है बेटा। ई बोर्ड इसको कितना हो जाता है बोलो, 3/8 इंटू बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है। सपोज if the conductor have taken the mixed metals, this is one of the conductor है बेटा, this is one of the rod है, इसको क्या लगा दिया, इसको और एक कंडक्टर ऐसा लगा दिया बेटा। ठीक है, ऐसा कंडक्टर ऐसा लगा दिए और पूरा का लेंथ कितना L2 L1 लिए, पूरा लेंथ ऑफ द कंडक्टर L1 है बेटा, इधर से इधर तक, वो भी L2 लिए इधर से किधर से। सो द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मींस द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द रॉड would be is given by E इक्वल क्या हो जाता है बोलो, इसमें भी किधर किधर लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B पर लगा दिया ऐसा। ओके ठीक है, विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ E है बेटा। इसके अक्रॉस में द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड इज गिवन बाय E इज इक्वल टू ऑफ B ओमेगा इनटू L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बाय 2 हो जाता है बेटा। वो L1 ज्यादा हो जाता है तो L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और L2 ज्यादा हो जाता है तो L2 स्क्वायर माइनस L1 हो जाता है। दैट इज इक्वल टू B ओमेगा इनटू L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाता है। ठीक है बेटा, दिस आर मोशन ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर व्हेन व्हिच इज मेड ऑफ ए डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, लिखो। और प्रॉब्लम देखो बेटा, इसे JEE 2024 में पूछे, a square loop of side 15 centimeters being moved towards the right at a constant speed of 2 meters per second में बेटा, B इसको दिया, V is equal to 2 meters per second as shown in the figure. The front edge of the enters 50 centimeters wide the magnetic field at T इसको 0 बेटा, at T इसको 0 से 0 पर इधर एंटर हो गए। The value of EMF induced in the loop in 10 seconds. T is को 0 to T is को 10 seconds में है, कितने इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो गए वो निकालना पड़ता है। ठीक है, सो डिस्टेंस इज इक्वल कितने हो जाता है बेटा, डिस्टेंस इज इक्वल इज ऑलरेडी यू नो वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज इक्वल 50 इज इक्वल टू 2 इनटू कितने हो गए बेटा T, दैट इज इक्वल टू T इज इक्वल कितने हो गए बेटा 25 सेकंड्स हो गए। और 25 सेकंड्स में है वो पूरा लूप which is in the magnetic field पर रहते हैं। so the flux changes across the coil would be is equal to क्या हो जाता है बेटा, वो constant चेंज भी नहीं हो जाते, pi is equal to constant हो जाता है। ठीक है, so the induced EMF developed in the loop is given by E is equal to d by dt of pi वैल्यू कितने बेटा constant है, that is d by dt of constant, d by dt of constant वैल्यू कितने बेटा 0 हो जाता है। बहुत आसान प्रॉब्लम। ठीक है, when the flux changes across a coil and induced EMF is induces. Otherwise, when the flux is constant, the induced EMF across the coil would be equal to 0. The coil would be in the form of in any shape per square, circle, rectangle. ठीक है, वो भी याद रहना पड़ता है। देखो बेटा, और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, this question was asked based on the what is it EMF motion EMF induced है बेटा। A wire of length 1 meter moving with a velocity of 8 meters per second at right angles to a magnetic field 2 Tesla. The magnitude of induced EMF between the ends of the wire कितने हो जाता है बेटा, वायर है। ठीक है, वायर है, इसका लेंथ कितने दिए बेटा 1 मीटर दिए, which is moving with a velocity of 8 meters per second है बेटा at right angles of the magnetic field ऐसा है, इसका वैल्यू 2 टेस्ला दिए। The induced EMF across the ends of the rod is equal कितने बेटा, A is equal to BLV, that is E is equal to 2E into L value 1 to V value 8, that is E is equal to 16 volt है बेटा। ठीक है, बहुत आसान प्रॉब्लम है और 2023 में पूछे। लिखे बेटा, और प्रॉब्लम देखो बेटा 2022 JEE में पूछे, दिस आल्सो बेस्ड ऑन द रोटेशनल EMF है बेटा। A metallic conductor of length L is equal to L is equal to 1 meter rotates in a vertical plane parallel to the east-west direction about its end with the angular velocity omega is equal to 5 radian per second पर rotate कर रहे हैं। If the horizontal component of the electromagnetic field BH दिए, that is equal कितने बेटा
0.2 e into 10 to the power of minus 4 Tesla, that is called 2 e into 10 to the power of minus 5 Tesla हो जाते हैं. Then the EMF induced two ends of the conductor would be equal to कितने हो जाते हैं. E is equal to क्या हो जाता बेटा, of BH omega into L square है ना. That is E is equal to of BH value कितना दिए, 2 e into 10 to the power of minus 5 into ओमेगा वैल्यू कितना बेटा, 5 रेडियंस into L square 1 square. ठीक है, 2 डिजिट्स कैंसिल हो गए. E is equal to क्या हो जाता है बोलो, 5 into 10 to the power of minus 5 volts और 50 माइक्रो वोल्ट्स हो जाते हैं. ठीक है, देखो बेटा और एक प्रॉब्लम है. स्क्वायर लूप PQRS हैविंग द नंबर ऑफ टर्न्स n is equal to 10 दिए. Area of the cross section A is equal to 3.6 into 10 to the power of minus 3 meter square है बेटा, and resistance R is equal to 100 ohms है. ठीक है, is slowly uniformly being pulled out of the magnetic field of induction B is equal to 0.5 Tesla beta, as shown in the figure. The work done in pulling the loop out of the field is dash 10 to the power of minus 6 joules से बेटा. और स्क्वायर लूप है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल क्या हो जाता है बेटा, E इज इक्वल टू BLV हो जाता है ना. ठीक है, बट I इज इक्वल टू E अपॉन R हो जाता है, दैट इज इक्वल टू BLV अपॉन R फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू BLV अपॉन R हो जाता है. ठीक है बेटा. So for force acting on the conductor is given by F is equal to N into F is equal to IBL हो जाता है ना, IBL हो जाता है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स को. एक टर्न्स को IBL है, n नंबर ऑफ टर्न्स को n into IBL है. दैट इज F is equal to N into I वैल्यू कितना बेटा, NBLV अपॉन R into BL हो जाता है बेटा. दैट इज F is equal to कितना हो जाता है बोलो, N स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R हो जाता है. The amount of work done W is equal to कितना बेटा, W is equal to F dot L है. F dot L means इसको क्या हो जाता, क्या मिल जाता है बोलो, और W is equal to F value is N square B square L square अपॉन R है बेटा, into L square अपॉन T हो जाता है. वो L है, वो V को क्या लिखना पड़ता है, L by T लिखना पड़ता है ना. दैट इज L into L by T of L square by T हो जाता है बेटा. दैट इज दिस एरिया हो जाता है, दिस A into दिस A हो जाता है, वो दोनों का मिलकर A स्क्वायर हो जाता है. दैट इज W is equal to N स्क्वायर मीन्स N स्क्वायर कितना बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स 10 स्क्वायर दिए into B स्क्वायर, B वैल्यू इज 0.5 होल स्क्वायर है बेटा, into A स्क्वायर मीन्स A वैल्यू कितना बेटा, 3.6 into 10 to the power of minus 3 होल स्क्वायर, वो A स्क्वायर हो गए. बाय RT है, R वैल्यू कितना दिया, रेजिस्टेंस 100 ohms दिए into T वैल्यू 1 सेकंड दिए. इसको क्या मिल जाता है बोलो, W is equal to 3.24 into 10 to the power of minus 6 जॉल हो जाता है बेटा. वो वैल्यू कितना बेटा, X वैल्यू कितने 3.24 हो जाता है. ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट मॉडल है बेटा, 2-3 टाइम्स वो पूछे है. ठीक है, लिखो बेटा. सेल्फ इंडक्शन है बेटा. सपोज कंसिडर एन इंडक्टर, वो भी इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस है. व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल सोर्स है बेटा, व्हेन द करंट इज चेंजेस अक्रॉस दिस द इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड एंड व्हाट हैपनिंग इज देयर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ is developed and induced EMF developed and flux also changes. Due to variation of the current in a coil, the EMF developed in the same coil. That phenomena is called as self-inductance beta. That is called pi is direct proportional to I. That is called pi is called क्या हो जाता है, L into I हो जाता है बेटा, minus L into I. The L is called as self-inductance. L is equal to magnitude of pi by I हो जाता है बेटा. Suppose inductor has a n number of turns. इसका लेंथ L बेटा, L है. The self-inductance of the inductor L is equal to mu naught n square into A L हो जाता है बेटा. फिर A is nothing but area of the cross section of the inductor.
L इज इक्वल टू म्यू नॉट, वो क्या हो जाता है n स्क्वायर अपॉन एल, एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल है बेटा, एल गेट्स कैंसिल होती है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर एल इंटू ये हो जाता है. दिस इज अ सेल्फ इंडक्टेंसी ऑफ द इंडक्टर है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय, क्या हो जाता है बोलो, सपोज कंसिडर ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस हियर which is connected across an alternating EMF source और बैटरी है बेटा, ऐसा बैटरी को कनेक्ट किया. ठीक है. then what happening is when the switch is put on, the current start flows across this inductor at t is equal 0, at t is equal 0 क्या हो जाता है बेटा, the inductor is behaves like a, what is that, an open loop है बेटा, ऐसा open loop, ऐसा open loop है बेटा. इसमें the energy stored U is equal to of L I square है बेटा. Okay. When the switch is, when a t is equal 0, the induced EMF across the inductor would be 0. In this case, the inductor behaves like a open loop. इसमें VL is equal क्या हो जाता है बेटा, 0. The potential difference across the inductor would be equal 0 हो जाता है बेटा. At in this case में VL is equal 0 हो जाता है, फिर एनर्जी भी 0 हो जाता है. So, ठीक है. At t is equal to infinity में, t is equal to infinity में क्या हो जाता है, the inductor behaves like a conducting wire है बेटा. ऐसा the inductor behaves like a conducting wire. Here V is equal to IR हो जाते हैं, that is I is equal to V by R हो जाते हैं. इसमें the maximum amount of energy stored कितने हो जाते हैं, U is equal to of L I square है बेटा, I square, that is U is equal to of into L means I is equal to V by R whole square हो जाते हैं बेटा. इससे U max is equal कितने हो जाते हैं, U max is equal to of LV square upon R square हो जाता है. This much maximum amount of energy has to be stored in an inductor. ठीक है. नेक्स्ट देखो बेटा, बेटा करंट इज इंक्रीज, सपोज कंसिडर है इंडक्टर है बेटा, वो भी इंडक्टर है, वो भी इंडक्टर है, ऑफ इंडक्टेंस है बेटा, वो भी इंडक्टर, वो भी इंडक्टर है. इट हैज इंडक्टेंस है. When the flux across the inductor has to be increases, when the flux across the inductor has to be increases, then what happening is that the opposing direction of the flux also, opposing direction of the flux also developed the existing magnetic flux है बेटा. In this case the inductor behaves like a, ऐसा हो जाता है बेटा. That means when the current is increased or flux is increased, it is the rate of di by dt is increased हो जाता, तो this inductor is behaves like this है बेटा. Suppose when the di by dt is decreased in the same inductor, when the di by dt is decreased, di by dt is decreased, what happening is that the opposite flux is developed the opposite direction of the decreasing है बेटा. ऐसा ऐसा के लिए ऐसा. ठीक है. इसमें the inductor behaves like a, what is that, first end is the negative terminal and second one is the positive terminal behave करते हैं बेटा. इसमें induced EMF डेवलप कितने हो जाते हैं, E is equal to E is equal to minus L into di by dt हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, म्यूचुअल इंडक्टेंसी. व्हाट है म्यूचुअल इंडक्टेंसी बेटा, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए वन कॉइल, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए वन कॉइल, द EMF is developed in the other coil है बेटा. दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंसी, दैट इज पाई इज इक्वल टू m into हाई हो जाता है बेटा. दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंसी. इट हैज इंडक्टेंस L1, सेकंड वन हैज इंडक्टेंस L2. So the coupling constant कितने हो जाता है बेटा, K is equal to some constant C into root over L1 into L2 हो जाता है. नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें नेक्स्ट देखो इसमें. ठीक है. सपोज कंसिडर टू इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंसेस L1 and L2 are connected like this है बेटा. ओके. टू इंडक्टर है, जिससे वन ऑफ द इंडक्टर है, ऑफ इंडक्टेंसी कितने हो गए बेटा, वो L1 हो गए, L1 हो गए, और एक में कितने हो गए, L2 है. these are connected like this. Okay. Two inductors of inductances. This is one of the inductor है बेटा, which is connected like this. This other one of the inductor, it is also connected like this. Okay. वो भी L1 है, वो भी L2 है. तो करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है. ओके.
Suppose when they are linked one to each other, this magnetic flux is linked with this inductor. So the net inductance कितने हो जाते हैं बेटा? L is equal to L1 plus L2 plus or minus 2m हो जाता है बेटा. If L1 L2 सेम डायरेक्शन रहते तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं. That is equal to L same direction is equal to L1 plus L2 plus 2m हो जाता है. Suppose if they are in opposite direction, L opposite direction is equal to L1 plus L2 minus 2m हो जाता है. ठीक है. This is the mutual inductance of this conductors. Next देखो बेटा, suppose consider a LR circuit, a inductor of inductance L and a resistor of resistance R. When they are connected across a battery of positive and negative terminal, what happening is that the current start flows across it. ठीक है. So the increasing current in the LR circuit is given by कितने बेटा? I is equal to I naught into 1 minus e power minus RT by L हो जाते हैं. वो L is nothing but inductance है बेटा. ठीक है. So the shape of the graph would be like this है बेटा. ठीक है. So when the switch is put on, the current start flows across the circuit and gradually increase, and it would becomes maximum after a certain time है बेटा. This is saturation state. This state is called as saturation state. Okay. At t is equal to L by R और tau is equal to L by R पर क्या हो जाता है बेटा? Tau is equal to L by R पर 0.63% of the maximum amount of the current will be flows. ठीक है. Next, when the battery has to be removed, what happening is that the current in the circuit is decreased. So the decreasing current is given by I is equal to I naught into e power of minus RT by L हो जाता है बेटा. When t is equal to L by R पर I is equal to क्या हो जाता है बोलो? I is equal to 0.37% of I naught हो जाता है बेटा. ऐसा डिक्रीज हो जाता है. इसका डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा हो जाता है बेटा. इसका डिक्रीजिंग ग्राफ ऐसा हो जाता है. With respect to the current, has to be decreased with respect to time ऐसा हो जाता है. At t is equal to L by R पर 0.37% of I naught डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. Next, suppose consider capacitor of capacitance C, which is connected to the resistor of resistance R with a battery of EMF. ये है बेटा. ऐसे कनेक्ट कीजिए. C और सर्किट है बेटा. ठीक है. When the switch is put on, the current start flows across the capacitor बेटा. ठीक है. इसमें the amount of charge induces, the increasing charge across the capacitor plate is given by Q is equal to Q naught into 1 minus e power minus t by RC हो जाता है बेटा. When t is equal to RC होने के बाद क्या हो जाता है? Q is equal to 0.67% of Q naught हो जाता है. इसका शेप ऑफ द ग्राफ ऐसा हो जाता है बेटा. तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो जाता है. दिस मैक्सिमम है Q naught हो जाता है. आफ्टर दिस व्हाट हैपनिंग इज दैट इट इज continuously slope of the graph is remains constant हो जाता है. At certain time that is equal to इसमें क्या at what time t is equal to RC पर 0.6763% of Q naught हो जाता है. In case of decreasing केस में क्या हो जाता है बेटा? Q is equal to Q naught into 0.37% हो जाता है. इसका शेप ऑफ द ग्राफ ऐसा हो जाता है बेटा. इसका शेप ऑफ द ग्राफ Q विद रेस्पेक्ट टू टाइम में ऐसा हो जाता है. वो Q naught से डिक्रीज हो रहा है. 0.37% ऑफ Q naught हो जाता है एट t is equal to RC पर. ठीक है. लिखो बेटा. एक प्रॉब्लम देखो बेटा. एक कॉइल the current changes from minus 2 amperes to plus 2 amperes in 0.2 seconds में. The induced EMF is a 0.1 volts दिए बेटा. The self inductance of the coil is equal to कितने हो गए वो भी पूछे. E is equal to कितने बेटा? minus L into di by dt हो जाता है ना. ठीक है. E वैल्यू कितने दिए? 0.1 is equal to L into क्या लिख रहा हूँ? 2 plus 2 लिख रहा हूँ. by dt वैल्यू कितने? dt वैल्यू is 0.2 सेकंड है बेटा. ठीक है. that is equal to 0.1 into 0.2 is equal to L into 4 हो गए.
और L इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 अपन 4 हो गए, दैट इज इक्वल टू 5 मिली हेनरी। ठीक है, लिखो बेटा। ओके बेटा, तो प्रॉब्लम देखो, द टाइम टेकन फॉर विच मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू when the solenoid of the resistance R and inductance L is connected to a battery is, देखो बेटा U is initial energy कितने बेटा, U is equal to of L I square है ना, इस it energy has to be reached to UF is equal to कितने, that is equal to 25% of its maximum value, that is equal to of L I naught square। ठीक है, इसमें क्या गेट्स कैंसिल हो जाता है बेटा, ऑफ एल गेट्स कैंसिल होते, आई स्क्वायर इज इक्वल टू 25/100 इंटू आई नॉट है, आई नॉट स्क्वायर है बेटा, 25 वन जा क्या हो जाता है 25 4 हो जाता है बेटा, दैट इज आई इज इक्वल कितने हो जाते हैं आई नॉट बाय 2। इतने करंट चल रहा है इसमें। ठीक है, तो मैक्सिमम कंडीशन में, बट व्हेन द करंट इज इंक्रीज, when the current is increased in the solenoid, the growth of current is given by I is equal to I naught into 1 minus e power minus RT upon L हो जाता है बेटा। ठीक है, वो कितने मिल गए, I naught by 2 मिल गए ना, that is equal to I naught into 1 minus e power minus RT by L हो गया बेटा। I naught गेस कैंसिल हो गए, e power minus RT by L is equal कितने बेटा 1 minus 1 by 2 है, दैट इज इक्वल टू 1 minus 1 by 2 को क्या हो जाता है बोलो, दैट इज इक्वल टू 1 by 2 हो जाता है बेटा, दैट इज इक्वल टू ई पावर आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू 2 हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू एल एन ऑफ 2 है बेटा, टी चाहिए हमारे को, टी इज इक्वल टू एल बाई आर इंटू एल एन ऑफ 2 हो जाता है, इतने टाइम हो जाता है। ठीक है बेटा, बहुत आसान प्रॉब्लम है, 2021 में पूछे, लिखो। और एक प्रॉब्लम देखो बेटा, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस दिया इसका L इज इक्वल टू 8.4 मिली हेनरी है बेटा, एंड रेजिस्टेंस 6 ओम्स है, और रेजिस्टेंस 6 ओम्स दिए, इज कनेक्टेड टू, इसका कनेक्ट किया ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स को कनेक्ट किया बेटा। A current in the coil is I is equal to 1 ampere चल रहा है बेटा, 1 ampere चल रहा है, approximately the time would be equal to how much, after what time the current in the circuit will be flows 1 ampere, so भी question है बेटा, is already know the growth of current in the circuit RL circuit is I is equal to I naught into 1 minus e power minus RT upon L हो जाता है बेटा, where I is equal to I naught is equal to कितने मैक्सिमम करंट V is equal to IR है, V is equal to IR, I is equal to V by R हो जाता है ना, V by R हो जाता है, that is equal to V upon R into 1 minus e power minus RT upon L हो गया बेटा। इसका वैल्यू दिए, इसका वैल्यू कितने दिए, I value is 1 ampere is equal to V value 12 upon 6 into 1 minus e power minus R means e power minus 6 into t upon L value कितने बेटा 8.4 into 10 to the power of -3 दी है, वो इसमें कनेक्ट करो 10 to the power -3 हो जाता है, दैट इज इक्वल, इसमें t इज इक्वल टू 0.97 into 10 to the power of -3 सेकंड हो जाता है बेटा, दैट इज t इज इक्वल टू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिली सेकंड हो जाता है। ठीक है, दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन 2021 में है बेटा, और बहुत आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, सारे से सारा प्रॉब्लम ऐसे रहता है बेटा, इन द पुराने का जेई मेंस में सारे से सारा प्रॉब्लम और जेई मेन और बोलो फिजिक्स क्लासेस में पूछे, ऑलमोस्ट 10 to 11 क्वेश्चंस आ गए बेटा। ठीक है।